Hello everyone, hello and a very good afternoon. So sorry the session got pushed by 15 minutes, but now here we are. So today we are doing error detection and sentence correction for competitive exams, and हमारा purpose ये है कि इन questions के through first of all we learn how to do the question, we learn grammar rule, अगर learn है तो we revise that rule. Sometimes there is just one rule, but the application is in multiple ways. We need to learn to spot that also. तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे. It's going to be a fun session. I want you to be involved in the session as much as possible. जितना आंसर दोगे, आप लोगों का अगर डाउट है डाउट पूछो. मेक श्योर यू आर गिविंग मी द करेक्शन व्हेन आई आस्क यू कि अच्छा ठीक है गलत है तो ओके बट करेक्शन क्या है. तो प्लीज गो अहेड एंड be a part of this session actively. Okay. If you are new here, please make sure to like and share and subscribe the channel. दोस्त जो मुझे नहीं जानते हैं, I am Niharika John Mehra और this is what I have been doing for more than 6 years. English पढ़ा रही हूँ मैं competitive exam के लिए. Good afternoon, good afternoon. So I think we can start in couple of seconds. That would do. All good, all ready. जल्दी बताओ मुझे ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है कि नहीं. Okay. So this is your first question. सब चंगा सी बढ़िया. That's your first question. पढ़ो क्या करना है. Answer is D. Very easy. हम बोल रहे हैं in recent years the significant rise of private cryptocurrencies such as के बाद example दे रहे हो. Now rise is the subject तो has आएगा. Has spooked central banks throughout the world. Spooked and pushed parallelism में है. The case for official digital currencies because digital एक adjective है. Adjective को समझाने का काम एक adverb करता है. Yeah. Yes. But I would still like to encourage you guys. I know कि हमारी एक habit है कि कुछ strange sound करा, weird sound करा, that should be an error. But let's go by the rules क्योंकि कई बार इसमें धोखा हो जाता है. We end up in making mistake. Come on, next answer. Need more time for this? Do you?
there is no error. Very good. You can't see any error because the answer is E. That is, there are like good equal chances for E to be the answer, na? बिल्कुल बिंदास बोलो. No error means no error. So Mr. Shankar, now एक टिप है आप लोगों के लिए. नामों में error नहीं होते हैं. So I will not waste my time pronouncing the name in my mind. So this guy himself cited a survey of central banks which found that 86% were actively researching क्या potential for such currencies, 60% were experimenting, देखो were researching, were experimenting, were deploying. तो आपका parallelism maintained है, सारे percentages को plural माना है हमने, and there we go, no error at all. So see, I really would love to have my students having that confidence कि no error means there is no error. That shows कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो. Will be or any modal verb with be can take verb third form and can take verb ing form as well. ऐसा नहीं है कि ing नहीं होता है. Future continuous tense में हम ing लगाते हैं, but in this case we don't need. There are decisions. So there are, because this is plural, to be made about the design of the currency, and this is with regards to, this is your phrase, how it will be issued, because this has a passive tone na, issue किसी और के द्वारा होगा, the degree of anonymity it will have, the kind that is to be used, and so on. तो बाकी is very easy to understand. Next. What's the answer? Very easy, no? Is आएगा. What is the subject? You get complex subject. Subject actual जो main शब्द होगा, that is quite far from the verb in the sentence. So you have to be extra careful in subject verb agreement. Okay, that is the first thing that we check. So however, it did remember to observe. So okay, that appropriate legislation that is regulating betting and gambling activities. So legislation is explained using a participle that is acting as adjective. तो उसका लेना देना नहीं होगा. That is not gonna affect my verb, no. Regulating A, B, C, D, E, F कितनी भी चीजें हो. So regulating betting and activities. This legislation is still possible, but something that conforms to constitutional propriety. So we are having a singular subject, simple subject verb agreement का question है.
Hmm. Okay, enough time given, more than needed. The answer is latter, not later. What is happening here? हम बोल रहे हैं out of to the second one. Later का use होता है time related when we say after some time. In that context, we use later. We are saying while digital currencies can borrow the technology feature of private cryptocurrencies, they significantly differ from the latter. तो दूसरा वाला दूसरे नंबर का जो भी है उससे, तो यहाँ latter आना था, later गलत हो जाता. Latter means second one out of two. Let's do some other questions. The type is different. Read करो क्या करना है इसमें. Second and the third one. You have to read the whole sentence, okay? But quickly. So while settlers didn't move into Iowa in large numbers until whatever time, after most Indians, including other things, had been driven away. Driven नाम का शब्द सुना है क्या कभी? Drive, drove, driven. Not even a vocab that exists. So they had forced to move. यहाँ पर हम नहीं बोल सकते टू मूव गलत है. दे हैड बीन फोर्स्ड एंड दे हैड बीन ड्रिवन आउट. तो ड्रिवन आउट ड्राइव आउट का मीनिंग ही यही होता है कि फोर्स करना किसी को लीव करने के लिए. सेकेंड एंड द थर्ड वन. लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा लर्नर्स. ऑल आई श्योर. Okay. So yes, what we get here is D, not all. All is well. Let's see हम इसको किससे जोड़ रहे हैं. बोलिविया. अब बोलिविया कैसी है उसको हटा दो थोड़ी देर के लिए. So this is the place. It is native to. People are native to some place. No, place is native to some other people. क्या उल्टा कर दिया आपने तो relation. You are son of your father, right? You are daughter of your father. उल्टा थोड़ी ना बोलेंगे. यहाँ पे आप वही कर रहे हो मिस्टेक जिन्होंने बोला all. So please read it. What's the relation? The first word is the place. So place is home to so many people. Place is inhabited by so many people, but place is not native to place cannot be native to people. It's going to be the reverse relation. तो ध्यान से पढ़ो. केवल ये देख के कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में तीनों में इज है एंड यू नो द कॉन्टेक्स्ट हियर इज ऑफ inhabiting a land. You read the sentence. Guys, come on. सबने all बोला. एक का भी D आंसर नहीं आया. पढ़ो पूरा सेंटेंस. See, this is a silly mistake. आई एम वेरी श्योर कि थोड़ा ध्यान से पढ़ते तो आप लोग सही आंसर देते थे.
So your confidence is shaken now. Is that the thing? This time the answer is all. Why can't you use passive voice, which is passive and present indefinite, and then you are also saying are being protected, that is also passive. So what's the difference here in first and third? Under the protection noun form हो गया, है ना? So Hunan is home to variety of animals. और variety का नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है. We will not waste our time in naming all them. Okay. Hunan is home to a variety. Now these all animals which are secure in. So we cannot use this form. Of course secured भी नहीं है यहाँ पर और security वाला noun वाला form लग रहा है. So we cannot do that. Now animals which are protected in areas, yes, which are animals which are under the protection of these areas, we can say that, which are being protected in the areas, these are reserve areas. तो आप तीनों ही का यहाँ पर यूज कर सकते हो. ह्यूमन, दैट्स फनी. चलिए करो, सोच समझ के करिए. Answer is one and civilizations ranging from, again आपको ये पढ़ने की नीड नहीं है कि ranging from where to where हो रहा है. Have exert influence on. Now have के साथ exert तो आप यूज नहीं कर सकते थे तो इसको हटा देंगे. Now these civilizations have and have, has नहीं आएगा because civilizations plural है. Have given shape to, left their mark on. They are not synonymous phrases. इनके slightly meaning different होते हैं, but इस context में हम दोनों ही use कर सकते हैं ना कि civilizations ने एक छाप छोड़ी and they have given shape to, they have molded something else. So this kind of a city. तो वहां पर आप दोनों का यूज कर सकते हो. Good. Guys, like and share जरूर करना. The council passed an ordinance to ban cats from certain locations while allowing them, क्योंकि cats बोल रहे हो तो आप them बिल्कुल बोल सकते हो. they तो नहीं आएगा, दो और but नहीं आएगा because these are the connectors जो contrast को introduce करते हैं. There is no contrast. One thing is happening along with another action taking place and because of this यहाँ पर आएगा while. अभी क्वेश्चन टाइप चेंज हो रहा है. आई जस्ट नीड टू चेक कि कहीं मेरा वीडियोस को ओवर शैडो तो नहीं कर रहा. ओके, लुक्स फाइन. चलिए स्टार्ट करो पढ़ना.
Hmm. टेल मी की कॉर्नर का दिख नहीं रहा है, रुक जा। ओके, इज इट सो? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर जो है वो है ई। यू आर सपोज टू सी द फ्रेज जो बोल्ड में है, इन दिस केस द होल सेंटेंस इज इन बोल्ड। ओके, the combination of growth and return on invested capital relative to its cost। देयर कैसे आएगा? किसको देयर मान रहे हो आप लोग? क्या है यहाँ पे प्लूरल जिसके लिए मैं देयर का यूज करूंगी, है ना? यू वर सपोज टू मार्क द ग्रामेटिकली करेक्ट वन, तो ये तो सबसे पहले आउट होता है ना स्टूडेंट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड रिटर्न on the relative capital or on the invested capital relative to कैपिटल रिलेटिव टू उसी का कॉस्ट है, तो यहाँ पे देर नहीं आएगा। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? सो माय ओल्ड स्टूडेंट्स दे डेफिनेटली नो, आई कॉल इट पीओडी। पीओडी मेथड इज पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पॉइंट ऑफ डिफरेंस, उसी वर्ड पर फोकस करो जहां पर कुछ डिफरेंट मिल रहा है आपको। जैसे यहाँ पे ड्राइविंग हुआ, तो ड्राइविंग के कारण ये गलत हो गया, ड्रोव के कारण ये गलत हो गया, है ना? एंड कॉस्ट के साथ आर के कारण ये गलत हो गया। आपको कॉम्बिनेशन ऑफ से लेके रिलेटिव वर्ड तक देयर इज नथिंग विच इज डिफरेंट इन ए बी सी डी, तो उसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दिस इज द वे जब आप एक क्वेश्चन बहुत ही क्विकली कर सकते हो, ठीक है? ट्राई करो, फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी, डोंट टेक टू मच ऑफ टाइम, ट्राई टू pinpoint the words which are different in other options and उसको कंपेयर करके देखो आंसर क्या आएगा। As companies rethink their portfolios, जैसे कि कंपनीज सोचते हैं, दिस इज लाइक इन द एक्शन, देर इज नो कॉन्ट्रास्ट, सो ऑल्दो विल नॉट कम, they should ask themselves. So this is like one condition, and as that action takes place, there is another thing to be done. It is not since के दो meaning होंगे. First meaning of since is you are using it in the sense of because, cause effect relationship अगर आपको बताना। Since का second use है when there is a time introduced in the sentence and from that point of time you are doing something। यहाँ तो दोनों ही नहीं हो रहे हैं ना। So since companies are rethinking, इसका meaning कुछ नहीं निकलेगा। But as companies rethink, जैसे वो सोचते हैं, they should do something, you know, there is another thing that has to be added, this is a suggestion। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर सी है कि बेस्ट ओनर्स आए। So you are saying no, I can't understand Tanya, what's your doubt? Are you saying कि यहाँ पर प्लूरल नहीं होना चाहिए कि द नहीं होना चाहिए? What you are saying?
Yeah. So just to tell if this is a doubt of anyone else as well. Um, whenever we use a superlative degree, maximum हमें singular ही मिलता है. But that doesn't mean that a superlative degree cannot have a noun which is plural. Okay. अगला करो. Answer is D. Reactivating deals that were put on hold may be unwise in some industries. अभी industries को हम समझा रहे हैं. Industries as a place की बात हो रही है कि industries as a structure की बात हो रही है, पहले तो आपको ये देखना था. Also, when you say changes, तो आप has नहीं बोल सकते, है ना? Changes यहाँ पे जो noun है after your relative pronoun, in which यहाँ पे relative pronoun के जैसे काम कर रहा है, so has is out for that reason, है ना? Also, when we go ahead with the sentence, हम इसे where से नहीं connect कर सकते क्योंकि industries as a place की बात नहीं कर रहे हैं. Industry जिसके अंदर changes हो रहे हैं, changes in और inside का context समझो आप वहाँ पे. So in which changes have weakened the competitive positions of deal targets or something has happened. And नहीं बोल सकते because here weak हुआ है या hurt हुआ है, you know, there is this like optional thing. It's not weak भी हुआ है and hurt भी हुआ है. From the tone of the sentence we understand that. तो आपका आंसर यहाँ D है. Any doubt till now? Shall we move ahead? Back to our single error detection questions. क्या एरर है? करेक्शन बता दो. I told you ना, tell me the correction as well. So if you think तमिलनाडु में द नहीं लगना चाहिए उसके पहले, so you tell me whatever correction you think. Oh, okay. Why? So it's okay if you give wrong answer. Okay, here you are to learn. Let's accept the reality and work on everything in like in a very open mindset. Answer is no error. ठीक है, कैसे मैं समझाती हूँ. The Tamil Nadu government, because we are saying government, the is okay. Government's effort, that is your noun subject, to protect its youth from temptations. किसके? Online gambling. How? By amending. अ लगा है तो यहाँ laws क्यों आएगा? अ
colonial gaming law, to ban rummy and poker names हैं इसमें error नहीं मिलेगा. Effort has not survived judicial scrutiny. So you have no error in this sentence. Let me know अगर कोई और doubt होता है तो. God said, पढ़ो sentence. Okay, now this is a direct sentence. So you don't have to worry much. What was once the exemption or escape has now been given the stranglehold. इसको passive में लिखेंगे ना. What is your subject actually यहाँ पे? What means as a pronoun यहाँ पर it's not a question वाला what. It's whatever. So what was once ABCD that is something different at present. So यहाँ पे that what was whatever has now been given by somebody else most claustrophobic stranglehold and has the possibility. Second वाले में main verb है नहीं and के बाद. It's just helping verb has जो खुद main verb बना हुआ है. So has the possibility of something that is bringing about what the most ridiculous results if applied in letter and spirit. Okay? Letter and spirit का meaning क्या होता है? There is an idiom as well over here. Anyone? Letter and spirit. Letter and spirit is no. uh, Anything that is done in letter and spirit. इसका context ये होता है that you are doing the actual thing, real thing, understanding every detail about it. तो वो जो है जो पीछे छुपा हुआ कुछ नहीं है, transparency है. In that way something is being done. उसको हम बोलते हैं letter and spirit. Okay. वो तो जार्गन वाला हो गया लेटर एंड स्पिरिट जो आप बोल रहे हो ना बिलाश. वी आर टॉकिंग इन अ जनरल मैनर, नॉट समथिंग दैट रिलेट्स टू लॉ पर्टिकुलरली. सो इफ समथिंग इज डन इन लेटर एंड स्पिरिट, वो वाला मीनिंग पूछ रही थी. It assumes that large sections of society, sections है तो require आया, require what guidance, lest their ideas ideas किसके हैं of freedom lead them to zones जहाँ पर lack of restraint and self control land them in debt. Landed क्यों बोलेंगे ना? We are using everything over here in present. It assumes
require. So the whole context here is flowing in present tense. So that portion of land जहाँ पे action वाला land हो रहा है, we need it in present tense. Okay. To के बाद uncharted. Oh, so you are okay. See, this is something I'll teach you. Okay. हमारे मन में ज़्यादातर यही होता है कि 2+V1 आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अनचार्टेड जो है यहाँ पे इट इज़ यूज्ड एज एडजेक्टिव. कैसे जोन्स हैं? अनचार्टेड जोन्स हैं. और हम बोलते हैं ना लीड देम टू अ प्लेस, lead them to India, lead them to a place, lead them to reality. तो ये इस to के बाद में to as a preposition, उसके बाद में मुझे एक noun चाहिए है. तो noun zones है. What kind of zones? Uncharted acting as adjective, V3 as adjective यहाँ काम कर रहा है. So if you take a better look at it, like whole sentence read करोगे तो आपको ये confusion नहीं होगा next time से, है ना? But if you will only be stuck to this smaller picture, so you will find कि वहाँ to के बाद verb का third form लगा है, which is not the case. Actually, it was a good question. Next time you will be um, careful about the same thing. Tell me the correction also, guys. क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? गलत correction बताओगे. Need to be made. Need to be made. Okay. Needs. We are going to have a good discussion on this question. किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है आप में से, so please listen to this thing very carefully when I explain, और अगली बार से फिर ऐसी मिस्टेक नहीं होना चाहिए. आंसर इज डी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे गेम्स की बात कर रहे हैं ना, प्लूरल, तो यहाँ दैट क्यों आएगा? गेम्स ऑफ चांस एंड गेम्स ऑफ स्किल. तो ये यहाँ पे जो है दोस्त, ये गेम्स के लिए आया है. तो सबसे पहले आंसर जो है यहाँ पे डी है. ओके, आई होप ये क्लियर होगा. Now coming to other parts. The court could not sympathize with the state's contention. Seems like एक पुरानी बात हो रही है यहाँ पे. It's not that is of present, a habit, a truth. तो ये वर्ब को बदलने का कोई रीज़न नहीं है मेरे पास में. It's plural, plural के साथ वर्ब पास्ट में यूज़ होता है. Were invariably open to manipulation. Open to is a phrase and after that we use noun, which is absolutely right. Now no distinction need be made. एक modal verb के बाद में आप be लगाते हो and you can use an adjective or verb form or a noun. Now how many of you remember कि need word जो है एक modal verb भी है? Need not. You need not call me. You need not do all the work yourself. Need and dare. Need and dare. These are two verbs जो कि main verb भी होते हैं and at the same time they are modal verbs as well. तो यहाँ पे modal verb के समान यूज हुआ है. Just imagine कि मैं need को may से replace कर दूँ. Okay? No distinction may be made. Okay? तो वो या can be made. तो आप इसको अभी बोलते क्या कि गलत है? नहीं बोलते, क्योंकि आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है बी के बाद में. दिस वॉज अ हिंट कि नीड जो है यहाँ पर मोडल वर्ब के समान यूज हुआ है. ओके, अनदर वे दैट यू कुड हैव अंडरस्टूड दैट नीड इज मोडल वर्ब. सोचो अगर मेन वर्ब होता, ओके,
अगर मेन वर्ब होता. So why I'm using made here? ऐसे मेन वर्ब दो दो यूज होते हैं कि आपने मेन वर्ब यूज कर लिया दैट इज इन फर्स्ट फॉर्म एंड बी लगाकर वापस से एक और मेन वर्ब यूज कर रहे हो दैट इज इन थर्ड फॉर्म. डज दैट मेक एनी सेंस? वी नेवर डू दैट. हम ऐसे दो दो मेन वर्ब्स बिना कनेक्टर के तो यूज ही नहीं करते. तो एक और हिंट था आपके पास में. यहाँ पर जो नीड है इज डेफिनेटली नॉट द मेन वर्ब. मेड था मेन वर्ब तो ये मॉडल वर्ब बन गया था. Oh, I'm sorry. I didn't see कि मैंने वही क्वेश्चन लगा दिया है. Clicked on the wrong slide. Pardon me, guys. Got lost in your comment. Okay. But whether the world will emerge from what pandemic, कैसे, in stronger or weaker, opposite है तो और position to tackle what? Crisis. Now, whether the whole thing will happen rests on कैसे overwhelmingly adverb is used on the decisions that China will take. यहाँ पर भी तो will emerge बोल रहे हैं. We are using future tense here. So later on also हम अगर future tense में ही बात continue करते हैं, there is not an issue, right?
पीपल ऑब्जर्व, छोटी छोटी चीजें हैं, प्लूरल चाहिए था यहाँ पे, सिंगुलर प्लूरल का क्वेश्चन है। रूल कितना इजी होता है ना सिंगुलर प्लूरल का, कि कहाँ पर सिंगुलर बनाते हैं कहाँ पर प्लूरल बनाते हैं, है ना। लेकिन व्हेन यू एक्चुअली यूज इट, लाइक हाउ यू अप्लाई इट, वो गेम ही अलग हो जाता है। तो समझो इस चीज। चाइना, एज पार्ट ऑफ चाइना सिंगुलर है तो इट्स प्लान्स टू रिस्टार्ट इट्स इकोनॉमी। China has already approved what construction किसका, of new power plants. This, अब इसको explain करूँगी, this is being explained. Plants accounting for some 17 gigawatts of energy this year, sending a collective shiver down the spines. Why spines? क्योंकि हम environmentalists की बात कर रहे हैं ना। So this is chill down the spine of someone, shiver down the spine of someone बोलते हैं, but हम यहाँ environmentalist की बात कर रहे हैं तो उन हर एक की करेज की बात, उनकी हिम्मत की बात कर रहे हैं जो कि नीचे आ गया है, तो स्पाइन्स आना था यहाँ पे, as simple as that. Last question. To be fair, this is the introduction. The decisions to proceed with, the phrase is when you go ahead with a plan, you say proceed with. तो यहाँ with आएगा. Yes, तान्या, मैं बताती हूँ किस condition में आता है ना. With the coal projects largely rest in the hands of China के provincial regional governments and not in Beijing. तो हम हैंड्स, एक्चुअल हैंड्स की बात नहीं कर रहे. पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट किसकी जिम्मेदारी है. दैट्स वाई द आया है. द किसी के भी साथ आ सकता है. काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल, अनकाउंटेबल एंड सम मोर नेम्स, प्रॉपर नाउन्स जिनके साथ में द का यूज होता है. मोस्ट ऑफ द केसेस द एंड अ प्लूरल. ये तब होगा when you will have that noun already mentioned earlier, or you want to specify those nouns. Okay, so yes, it's a possibility. Okay, chalo, you can check out my grammar course which we have under the course of RBI and CSIR. अभी हमने recently एक course करा था CSIR का. So in the coming days again we will have other exams, and grammar is of course a part of it. So we discussed all these rules in details. Theory portion होता है उसमें cover. Okay, no, it's on the website. So हमारी जो Crack Grade B की website है, you will get it there. Okay, so time for me to say bye bye. Tomorrow we do have a class, and the timing is going to be 1:30. Today for some reason थोड़ा push हुआ था, but yes, time will be 1:30. Okay, thank you so much for being here. Do share, like and subscribe.